Hello students, here I am Zaki Kamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. So here I am back with an online lecture series on income tax subject. So let's start with lecture. In today's lecture, we are going to cover some more provisions from income from other sources. In last lecture, we started our new topic, that is income from other sources. Now today, we are going to discuss some more provisions from income from other sources. So let's revise the last lecture, that is income from other sources. That was on the income from other sources. So in that lecture, we discussed that which income will be taxable under this head. So we discussed various incomes that will be taxable under this head. And one more term that we see, that the dividend income will be taxable under this head. Okay, but there is a dividend that is deemed dividend under section 222. Okay? So in the case where there is deemed dividend under section 222E, then that deemed dividend under section 222E will not be taxable under this head and will be exempted from tax. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा और वहां देखा हमने कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, लेकिन एक डीम्ड डिविडेंड होता है अंडर सेक्शन 222। तो वो डीम्ड डिविडेंड किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता और वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, so we discussed these 12 incomes that is taxable under this head. Okay, now after that we discussed the deemed dividend under section 222A, and deemed dividend is not taxable in any head or will be exempt from tax. Okay, then we discussed what is the meaning by deemed dividend. What do we mean by deemed dividend under section 222E? So deemed dividend is any advance or loan by any closely held company to an equity shareholder who had at least 10% voting right in your company, or to give or to provide such loan or such advances to any concern in which the shareholders which have 10%, at least 10% voting right in your company, and had 20% at least 20% voting right in another company to whom you are providing the advances of loan. Okay, so that these two type of advances or loan will be known as deemed dividend under section 222 and will be exempt from tax. After that, we discussed the deduction for expenses. So we provide some deduction for expenses from the income that is taxable under the head other sources. So we provide some deduction for expenses from those income, okay, that we have already discussed. Then now today's first topic is expenses not allowed as deduction. There are some expenses on which no deduction will be allowed. So expenses not allowed as deduction under section 58. So let's see. First expenses for which no deduction is allowed. First is personal expenses. If there is any personal expenses, then in that case, these expenses will not be allowed as a deduction. Okay. Then interest or public salary paid outside India on which TDS is not deducted. We have talked about little about TDS in our previous lecture. TDS के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था. TDS का एक पूरा चैप्टर होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड सोर्स. इसका मतलब जहाँ पे से वो इनकम अराइज हुई है, जो भी सैलरी आप प्रोवाइड है, जहाँ से वो इनकम अराइज हुई है, वहीं पे आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है और फिर वो उस इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनकम जहाँ से आई है उस पर्सन ने पहले ही आपकी इनकम पे टैक्स डिडक्ट कर दिया है. So for an example, if an employer pays some salary to employees, then what does employer do? Employer will do that employer will cut some tax on that salary income and will deposit that tax on income tax department. तो एम्प्लॉयर जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देगा तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा. टीडीएस क्या करेगा? टीडीएस के लिए जितना भी सैलरी पे टैक्स बनता है उतना टैक्स डिडक्ट कर देगा. एम्प्लॉयर रिमेनिंग सैलरी किसको दे देगा? एम्प्लॉय को दे देगा. अब टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की. अब एम्प्लॉय को ना कोई टैक्स पे करना है, ना ही कोई टैक्स डिपॉजिट करवाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की, क्योंकि एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर दिया. So any interest or salary on which is paid outside India or on which TDS is not deducted, then in that case these interest or salary expenses will not be deducted from the income and deduction will not be allowed in this case. Okay. Then
expenditure referred to in section 48. We will discuss section 48 further. So for this time, for now, this is only expenditure which is referred in section 48 will also be not allowed as deduction. Then income tax and wealth tax paid. If you paid any income tax or wealth tax, then these expenses will not be allowed as deduction. Then any expenditure in connection with winning of lottery, coursework, puzzles, etc. If you win some amount from lottery, some coursework and puzzles, if you earn some income and you do any expenditure for these activities, then such expenditure will not be allowed as deduction. Whereas when you earn the income from these activities, income will be taxable, but expenditure on these activities will not be allowed as deduction. Okay. Yes. Now there is a note. Expenditure incurred by SSE for the activity of owning and maintaining racehorse shall be allowed as deduction. In these activities, no deduction will be allowed in respect of expenditure. But where there is an activity that is owning and maintaining racehorses. So if you do any expenditure on owning and maintaining the racehorses, then the expenditure on that and the maintenance cost on that race horses on these horses will be allowed as deduction. So if you do any expenditure or if you do any expenditure of owning and maintaining the race horses, then in that case such expenditure will be allowed as deduction. Okay. तो अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें रेस हॉर्सेस की रेस करवाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं आप, और उस एक्टिविटी के लिए आप हॉर्स को ओन करने में, खरीदने में या उसको मेंटेन करने में, हॉर्सेस को मेंटेन करने में कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन. ओके. बट इन एक्टिविटीज के लिए अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो डिडक्शन, उनकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. So deduction for these activities is not allowed, and the deduction for this activity, that means the maintaining or owning the race horses, expenditure will be allowed. Okay. Yes. Now let's see deemed dividend, section 16. In any expenses claimed as deduction by the SSE in year, but in subsequent year it was recovered by such SSE shall be included in the income will be taxable. So what do you understand by deemed dividend? So basically, I have told you that deemed dividend means dividend which is not actually dividend, which is distributed by company, but due to nature of that income, it is assumed that this income is deemed income or deemed dividend. Okay. So say at the same time, same as with deemed income. So income, what you understand by deemed income? So ऐसी इनकम जो एक्चुअल में इनकम नहीं है, बट उसके नेचर की वजह से उसको इनकम मान लिया जाता है. तो ऐसी इनकम कौन सी होगी? डीम्ड इनकम. और डीम्ड डिविडेंड ऐसी डिविडेंड जो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है, लेकिन उसके नेचर की वजह से उसको डिविडेंड मान लिया जाता है. ओके. सो if any expenses claimed as deduction by the SSE in year but in subsequent year it was recovered. So suppose in this year you claimed expenses for deduction. That means आपने ये बोला कि हमारा इस ईयर में ये एक्सपेंस हुआ, तो आप इसका डिडक्शन दो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने बोला इसका डिडक्शन दो. दैट मींस उतने पोर्शन पे आपके टैक्स नहीं लगेगा. सपोज आपकी 1 लाख इनकम है और आपका एक्सपेंस हुआ 20,000 का एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में 20,000 डिडक्ट हो जाएगा. तो टैक्स कितने पे लगेगा? सिर्फ 80,000 की इनकम पे आपका टैक्स लगेगा. नाउ ये जो 20,000 का डिडक्शन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले चुके हैं, ये इन सब्सिक्वेंट ईयर आपको रिसीव हो जाता है. सपोज ये कहीं ना कहीं से आपको रिसीव हो जाता है 20,000 रुपीज. तो उस केस में क्या होगा? ये 20,000 अगर सब्सिक्वेंट ईयर में आपको रिसीव हो गया, पहले वाले ईयर में आप इसका डिडक्शन भी ले चुके हैं, इसका फायदा ले चुके हैं, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं ये इनकम वापस मिल जाती है, तो वो इनकम आपकी क्या मानी जाएगी? डीम्ड इनकम एंड विल बी टैक्सेबल इन व्हिच ईयर यू विल रिसीव दैट इनकम. ओके. इन subsequent year when you will receive this income, that income will be considered as deemed income and will be taxable under the head other sources. Okay. Yes. Now the next income is deemed gift received by any individual. If any person or any HUF received any income, received any gift, then such gift will be taxable under the head other sources. Okay. So if an SSE received
gift from unrelated person shall be taxable under section 56(2)(7) in the following manner. If any SSC received a gift from any unrelated person shall be taxable. So make sure that gift is received from an unrelated person. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो गिफ्ट किससे रिसीव होना चाहिए, एनी अनरिलेटेड पर्सन, किसी रिलेटिव से रिसीव नहीं होना. So if any gift received by any unrelated person, then what will be the tax treatment? So there is a first column, if gift received by any sum of money. गिफ्ट रिसीव जो हुआ है वो मनी में रिसीव हुआ, मनी के टर्म में रिसीव हुआ. इफ यू रिसीव एनी सम ऑफ मनी एज अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन को पे किए. सपोज आपको कोई सपोज कंसिडरेशन क्या होते हैं कि जैसे आप मेरे को कुछ गिफ्ट देंगे, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसा दूंगी. लेकिन मैंने बोला कि आप मेरे को ये चीज गिफ्ट कर दीजिए, ये जैसे किसी कोई भी आप समझ लीजिए कोई मशीन है तो आपको अच्छी लगी, आपने बोला ये आप मशीन मेरे को गिफ्ट करो, इसके बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा. So that is that gift will be with consideration. But if you receive any sum of money in without consideration, उसके बदले में आप उसको कुछ नहीं दे रहे, कोई भी consideration नहीं दे रहे. So if you receive any sum of money without any consideration, and such money is such amount is exceeded by rupees 50,000. If such amount is exceeded by 50,000, then whole amount will be taxed. Okay. So basically, if you receive any sum of money without consideration, and if such money is exceed from 50,000, then whole amount will be taxable. Okay. Then immovable property. So in this case, for C case, let's have an example. If we receive 40,000 from any person, okay, from any unrelated person, okay, then in that case 40,000 will not be taxable and whole 40,000 will be exempt from tax. Okay. If you receive 30,000 from any rupees 30,000 from any person, any unrelated person, then in that case whole 30,000 will be exempt from tax. If you receive 60,000 from any person, that is exceed that amount is exceed by 50,000, then in that case whole 60,000 will be taxable. Okay? Yes. Then next is immovable property. If you receive any immovable property as a gift without consideration, and if the stamp duty value of the property exceeds rupees 50,000, then what amount will be taxable? So stamp duty value will be taxable. So if you receive any immovable property from any unrelated person without any consideration, and the stamp duty value of that property exceeds rupees 50,000, then whole stamp duty value will be taxable. Okay. So there is always a stamp duty valuer. हमेशा एक आपको stamp valuer मिलेगा, SVA, which we have already discussed in capital gain chapter. SVA क्या होता है? Stamp duty valuation officer. Okay, authority, sorry, valuation authority. वो क्या करती है, आपकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू है आज के डेट में, वो आइडेंटिफाई करके आपको डिफाइन करके आपको देते हैं, डिटरमाइन करके आपको बताती है कि आपकी प्रॉपर्टी की ये वैल्यू. ओके. So if you receive an immovable property and SPA declares or determines the value of that property which is exceed from 50,000, then stamp duty value which is decided by SVA stamp valuation authority. So if the amount which is determined by SVA and that stamp duty value exceeds 50,000, then whole duty will be or stamp duty value will be taxable. So let's have an example. Suppose Mr. X is received in house property. Mr. X ने house property receive करी as a gift, और जब stamp valuation के पास valuation officer के पास हो गया, तो stamp valuation officer ने उसको बताया इसकी stamp duty है, मतलब आज की डेट में इसकी वैल्यू है, stamp duty वैल्यू है इसकी 1 लाख रुपीस. Then in that case, their stamp duty value is rupees 50,000. Then whole 1 lakh will be taxable because the stamp duty value is 1 lakh. Suppose if the stamp duty value says the value of stamp duty value of this property is 40,000, then in that case whole 40,000 will be tax free. No tax will be charged. Tax will only be charged if stamp duty value exceeds by 50,000. Okay. Yes. Now let's move on. If
you receive any movable property. This was immovable property. Now you are receiving movable property as a gift. Then in that case, if you receive that movable property without consideration, if fair market value of such property exceeds 50,000, then fair market value will be taxable. Okay. So if you receive any movable property without any consideration, and the fair market value of such property exceeds by rupees 50,000, then fair market value, fair market value will be taxable. Okay. And you receive any movable property as a gift in inadequate consideration, in lieu of inadequate consideration. Inadequate consideration means you paid some consideration, but that consideration is not proper or not adequate. मतलब आप 10 लाख की प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन दे रहे हो ताकि आप टैक्स से बच पाओ, इस वजह से आप कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हो. 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो सिर्फ 1 लाख. दैट इज नॉट एडुकेट कंसिडरेशन, दिस इज इनएडुकेट कंसिडरेशन. Okay, so if you receive any movable property as a gift and in lieu of inadequate consideration, and if the fair market value minus consideration, you will calculate the fair market value minus consideration is greater than 50,000, then taxable amount will be fair market value minus consideration. So the balance amount of the balance between FMV and consideration will be taxable. Okay, let's have an example. Suppose you receive a house property, that is immovable property. Okay, so you receive a house property as a gift. Okay, and the fair market value of that property is 10 lakh rupees, and you receive in lieu of suppose 5 lakh rupees, in lieu of 5 lakh rupees consideration. So you have 10 lakh rupees fair market value of that property, and you pay 5 lakh rupees as consideration and receive that gift or that house property. So the difference between fair market value and consideration is 5 lakh, that is greater than 50,000. The taxable value will be 5,000. Difference between fair market value and consideration, that is 5 lakhs. Okay, so 5 lakhs will be taxable amount. So that 5 lakh will be taxable. Okay, yes. Now next, gift received by individual HUF will not be taxable in following. So if you receive any gift or if any gift received by any individual or HUF will not be taxable in the following case. So which are the cases in which no value of the gift will be taxable? So in following cases, no gift will be taxable. When gift received from any relative on the occasion of marriage of individual, under a will or a by way of inheritance, any contemplation of death of the payer or donor, from any local authorities, trusts and universities, etc. So if you receive any gift from any relatives or on the occasion of marriage of individual or through a will or a way of inheritance, in contemplation of that of the payer or donor, or any local authority, trust and university, etc. So if you receive any gift from these persons or these organizations, then in that case, such gift will not be taxable in any head, not in other sources or not in any other head. So these kind of gift income will not be taxable. Okay, these will be tax free income. Okay? So अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं किसी रिलेटिव से, आपके उस मैरिज के ओकेजन पे रिसीव करते हैं, किसी बिल में आप करते हैं, इनहेरिटेंस में करते हैं, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, अगर पेयर और डोनर की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है गिफ्ट और वो प्रॉपर्टी, या फिर आपके किसी सपोज आपकी यूनिवर्सिटी है आपको कोई स्कॉलरशिप देते हैं, आपके कॉलेजेस आपको कोई स्कॉलरशिप देते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो आपको स्कॉलरशिप देगी वो गिफ्ट, वो स्कॉलरशिप टैक्सेबल नहीं होगी, उस पर टैक्स फ्री होगा. That scholarship income will be tax free. Okay? So these are the 5 cases where gift income is not taxable. Now, we told that if you receive any gift from any relative, then that gift will not be taxable. Now, in relatives, whom we will include, किसको और किसको आप include करेंगे? Spouse of individual. Spouse means husband या wife. अगर हम बात कर रहे हैं male की, that means spouse of that male is wife. Okay. If we are talking about women, then in that case, spouse of that women is husband. Okay. So spouse of individual. अगर individual कोई male है तो उसकी wife,
of individual, brother and sisters of individual, brother and sister of spouse, brother and sister of parents, any linear ascendant or descendant of individual, any linear descendant of spouse. अगर आपने कोई अपना लीगल हेयर रखा है, अपना कोई नॉमिनी दे रखा है, तो इंडिविजुअल का नॉमिनी भी और स्पाउस का नॉमिनी। तो इन लोगों से अगर आप जो ये पर्सन मैंने बताया, इनसे आपने कोई इनकम रिसीव करी, गिफ्ट रिसीव करा है, तो गिफ्ट इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल, ओके, एंड विल बी टैक्सेबल, ओके। देन नेक्स्ट इज बॉन्ड वॉशिंगटन ट्रांजैक्शन। So bond Washington, any income from bond washing transactions will also be taxable under this head. So first of all, what do you mean by bond washing transaction? So if owner of any security sell its securities just before due date and again acquires them after the due date, he will be able to avoid the payment of tax of interest. So suppose आपने अपने टैक्स से, सपोज आपके पास कोई सिक्योरिटीज है, आपके पास शेयर है और कोई सिक्योरिटी डिबेंचर्स है, कुछ और सिक्योरिटीज है, ओके। तो आपने क्या किया कि उसके सपोज शेयर्स आपके पास है, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले थे आपके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होने वाली थी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने क्या किया, उन शेयर्स को बेच दिया, ओके। तो अब क्या होगा, आपके डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। और जैसे ही ये पीरियड खत्म हुआ, टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, आपने टैक्स पे कर दिया, वैसे ही आपने वो शेयर्स वापस एक्वायर कर लिए, वापस परचेज कर लिए, ओके। तो इससे क्या हुआ कि आपके डिविडेंड की इनकम पे से टैक्स लगना बच गया, आपने कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर ली। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उनको हम बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। तो इफ you are doing any bond washing transaction, then in that case वो ये उन शेयर्स पे डिविडेंड को ये माना जाएगा कि ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन है और ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन से हुई हुई इनकम है, तो इस इनकम को अंडर दिस हेड टैक्सेबल, दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दिस। तो वो डिविडेंड की इनकम अंडर दिस हेड टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी, ये। There is an exception of this rule, bond Washington transaction exception is there, that if there is no avoidance of tax, अगर ऐसा करने की वजह से आपका टैक्स का अवॉइडेंस नहीं होता है, if there is no avoidance of tax, और avoidance of tax is exceptional and unsystematic, मतलब आपने जो ये किया है वो टैक्स अवॉइडेंस के इंटेंशन से नहीं किया, और ऐसा करने से कोई टैक्स का अवॉइडेंस हो भी नहीं रहा है, ओके। तो और अगर कोई एविडेंस हो भी रहा है तो एक्सेप्शनल है, ऐसा होना नहीं था लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल वे में हो गया है, ऐसा सोचा नहीं था आपने और ना ही ऐसा होना था, लेकिन वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि इसका टैक्स बच गया और अनसिस्टमैटिक है, आपने पहले से सोच के नहीं की। तो इन दोनों केसेस में बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस की जो इनकम होगी दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, ओके। Now next is dividend stripping in case of shares under section 94(7). If there is any dividend stripping, in that case such dividend will be taxable under this head. So firstly, what do you mean by dividend stripping? So see, what is dividend stripping? If a person purchase shares within 3 months prior to record date and after the receiving the dividend, shares sold within 3 months or sold within 9 months after the record date, then any loss incurred to the extent dividend will not be considered. Extent to dividend will not be considered. Okay, let me see one more time. If a person purchase shares within 3 months prior to record date, okay, and after the receiving the dividend, shares sold within 3 months or sold within 9 months after the record date, okay, then any loss incurred to the extent of dividend will not be considered, okay. So see, what is it? Dividend stripping means आपने क्या किया, किसी कुछ शेयर्स परचेज करे जो कि उसकी रिकॉर्ड डेट, जो शेयर्स वो रिकॉर्ड होने के कंपनी में उसकी विदिन 3 मंथ्स प्रायर टू रिकॉर्ड डेट, अगर आपने रिकॉर्ड डेट से 3 मंथ पहले वो परचेज करें, जब रिकॉर्ड डेट मतलब जब उसका डिविडेंड मिलने वाला था, ओके। आप अभी की डेट का समझिए कि आपको जिस दिन उस पे शेयर पे डिविडेंड मिलने वाला था उससे 3 महीने पहले आपने शेयर परचेज कर लिए, जैसे ही आपको डिविडेंड मिला आपने वो शेयर बेच दिए, ओके। तो वो तो ठीक है आपने बेच दिए, ओके, पर बेचने पे अगर आपको कोई लॉस
लॉस हुआ, तो आप बोलोगे कि हमको शेयर्स हमने परचेज किए तो उसको बेचा तो उसके लिए हमको लॉस हुआ, तो हमको उसका डिडक्शन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए उसकी। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जिस तक आप जहां तक आपने डिविडेंड रिसीव किया, जितने अमाउंट तक आपने डिविडेंड रिसीव किया उतने अमाउंट तक डिडक्शन नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा की भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो let's have an example. Let's understand with example. सपोज किसी की एक कंपनी में डिविडेंड आपको मिला था 31 मार्च को, ओके, एंड उससे 3 महीने पहले सपोज दिसंबर में आपने वो शेयर परचेज करे और मार्च में उसके ऊपर क्या मिलने वाला था, डिविडेंड मिलने वाला। जैसे ही मार्च में आपको डिविडेंड मिला आपने अप्रैल में उसको बेच दिया, ओके, अप्रैल में आपने उन शेयर्स को बेच दिया और आपको इससे डिविडेंड की इनकम होगी 1 लाख, ओके। नाउ जब आपने 1 महीने के अंदर अंदर शेयर्स को बेच दिया तो उससे आपको लॉस हुआ 50,000 का, ओके, तो 50,000 का आपको लॉस हुआ। तो अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि 50,000 का जो हमको लॉस हुआ उसका हमको डिडक्शन चाहिए। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा क्योंकि आपने ये शेयर्स जब डिविडेंड मिलने वाला था उसकी रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले खरीदे थे, विद इन 1 मंथ आपने इसको सेल कर दिया। तो ये एक केस है डिविडेंड स्प्लिटिंग का, और इस केस में आपको लॉस के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अप टू द लिमिट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड की लिमिट क्या है, डिविडेंड कितना रिसीव किया 1 लाख, और जबकि डिडक्शन कितना, लॉस कितना हुआ 50,000। तो 1 लाख तक जब आपको लॉस होगा ना तब तक तो आपको कोई भी डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका लॉस 50,000 का जो लॉस है कि 1 लाख से ज्यादा होगा, मतलब 1,10,000 होगा, तो उस केस में आपको 10,000 जो लॉस हुआ है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 1 लाख तक तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका लॉस 1 लाख तक है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको द लिमिट ऑफ डिविडेंड यू विल नॉट अलाउड एनी डिडक्शन, ओके। तो बेसिकली डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए कंडीशन क्या कि आप विद इन 3 मंथ्स आपने विद इन 3 मंथ्स प्रायर 3 मंथ्स आपने परचेज किया हो और विद इन 3 मंथ्स बेच दिया हो, या रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स के बाद बेच दिया हो, उस केस को हम बोलेंगे डिविडेंड स्ट्रिपिंग, एंड नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर सच लॉस, okay, up to the extent of dividend. Okay. So this is all about your income from other sources. In next